Hello students, welcome to Vipinsharma physics channel. And dear students, we are doing the chapter waves 10 plus 1 CBSE and state board pattern, and I'm giving you the basic concepts on wave motion. So I have told you what is wave, what are the types of waves, wavelength. Then I'm going to today discuss with you a very theoretical topic called important characteristics of wave motion unplugged. Let's go to the board and let's write over there important of, yeah, we can say characteristics of wave motion. Characteristics of a wave motion. So this is going to be our topic. What? Characteristics of a wave motion. Well, students, to understand the characteristics of the wave motion, there are two types of mechanical waves, right? Basically, I am explaining you the mechanical wave. We are doing waves in mechanics, right? So there are two types of mechanical waves. One is a longitudinal wave and other is transverse wave. Wave motion is a kind of disturbance. Wave motion is a kind of disturbance traveling in material medium with certain fixed velocity. वेव मोशन क्या है? वेव मोशन एक डिस्टर्बेंस है. इट्स अ डिस्टर्बेंस जो कि एक फिक्स्ड वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है. मींस इसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर मतलब क्या ये वेलोसिटी फिक्स होती है? मैं बोलूंगा नहीं. तो सर आपने लिखा है वेव मोशन एक डिस्टर्बेंस है जो विद फिक्स वेलोसिटी ये मूव करती है, तो ये क्या है? मैं बोलूंगा यार ये आइडियल कंडीशन है. दिस इज अंडर एन आइडियल कंडीशन. मतलब जब हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, when we understand concept, we take it in the purest form. We take it in the purest form. We do not change we do not adulterate with other side impacts. We take it in the purest form. That's why it is called an ideal condition of learning. दूसरा, in wave motion there is no transfer of particle. No transfer of particle. पार्टिकल कहीं भी मटेरियल मीडियम का ट्रांसफर नहीं होगा.
डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, बट पार्टिकल नहीं ट्रेवल करेगा। यू इमेजिन देयर इज ए वेरी बिग स्टिल वाटर pond or a lake. You just take a still water, I mean say trough, एक बहुत बड़ा still water का एक ट्रफ ले लो, उसमें आप पानी भर के उसमें कॉक्स प्लेस कर दो 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस पे। कर सकते हो घर में भी आप। पानी का एक टब लो, टेक ए वाटर टब एंड प्लेस सम फ्लोटिंग anything else, cocks or whatever it is, तो उसमें आप डिस्टर्बेंस ट्रेवल क्रिएट कर दो। when we create disturbance, do you know what happens? The cocks move up and down, up and down, up and down, but they do not get displaced. वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, वो अप एंड डाउन जरूर मूव करेंगे, वो डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो हम कहेंगे वेव मोशन है मींस डिस्टर्बेंस है। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, बट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा। तो दिस इज हाउ द वेव मोशन is there. Hope it is clear. So there is no transfer of particle. अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डिस्टर्बेंस है। अब डिस्टर्बेंस मींस वेव मोशन, डिस्टर्बेंस बोले तो वेव मोशन। जो डिस्टर्बेंस है वो एक पार्टिकल से नेबरिंग पार्टिकल पे जा रही है, इट्स मूविंग, बट नॉट इंस्टेंटेनियसली, इट टेक्स टाइम, a little later, you know, and the disturbance reaches little later and it also executing vibratory motion after certain time interval. अब फिर आप पानी का टब लो, उस पानी के टब में आप क्या करो कि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। तो वो जो डिस्टर्बेंस है वो जैसे ये एक सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो डिस्टर्बेंस यहां पहले आई। अब ये डिस्टर्बेंस जो है थोड़ी देर बाद फिर यहां भी आएगी, ठीक है ना। और जैसे डिस्टर्बेंस पहले यहां आई, फिर थोड़ी देर बाद ये डिस्टर्बेंस यहां भी आएगी। मींस ये डिस्टर्बेंस इंस्टेंटेनियसली नहीं ट्रेवल करती, इट डज नॉट ट्रेवल instantaneous, it takes time to travel. Hope it is clear. You know like जो पार्टिकल वेलोसिटी, इसमें दो तरह की वेलोसिटी होगी। देखो मैं आपको बताता हूं। ये लाइक दिस, तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो इसकी तो एक तो होगी पार्टिकल वेलोसिटी, एक तो होगी पार्टिकल वेलोसिटी, और दूसरी है डिस्टर्बेंस वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वेव वेलोसिटी। जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू
time. And students, जो wave velocity है वो is independent of time. Particle velocity varies with respect to time, and the wave velocity is independent of time. मतलब the velocity of every oscillating particle is different at its different positions, you know, in one oscillation, but what with velocity of wave motion is always constant. जैसे ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है. तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी सबकी अलग अलग है, लेकिन जो स्टूडेंट्स वेव है उसकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती. पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है. अब देयर इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक. This was third velocity. Fourth is elasticity. The material medium has got elastic property. What is the meaning of elasticity? The particle is having elastic property in the sense that the particle of the material medium comes back. It always has got a restoring force. If you remember the chapter properties of bulk matter, we talk about the elasticity is the property of the material by virtue of which on the removal of deforming force the body regains its original configuration. Do you remember that? The particle regains its original configuration on the removal of deforming force. But dear students, here material medium, whatsoever it is, where the wave is produced, it has got a property of elasticity. It has got a property of elasticity. So it does possess the property of elasticity, and it is very much, I should say, means it varies. The particle velocity varies, but the property of elasticity is very much there. And students, it has also the property of inertia. It is the only inertia which makes the waves to create trough or crest. I've told you when you go in the first video how there is a trough is formed and then crest is formed when you drop a stone. When you drop a stone, then there is a trough created in the water from the side continues to pour into that trough, and once that is due to the inertia. During the next characteristics, during the propagation of the wave motion, during the propagation of the wave motion, energy is propagated. Energy is propagated. Energy travels from one point to the other point in the medium, but there is no transfer of mass. There is no transfer of particle. Okay. And do you know, students, agla point, the net displacement of the particles is 0. The net displacement of the particle is 0. Means there is no net displacement. The net displacement of the particle is 0. All right.
I'm talking of the displacement because it is oscillating. When you are oscillating, you will go from mean to extreme, extreme to mean, then mean to another extreme, then mean. तो जब आप मेन से डिस्प्लेस होते हो तो एक एक्सट्रीम पे जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हो, फिर वापस आते हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो. सो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो. और एक मैंने क्या बताया? नो ट्रांसफर ऑफ मास बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. So these are the important characteristics of wave motion. एक बार मैं इसको क्विकली समराइज कर देता हूं. पहला करेक्टरिस्टिक्स है वेव मोशन एक डिस्टरबेंस है जिसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है. दूसरा, इसमें ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल नहीं है. थर्ड, वेव वेलोसिटी इज फिक्स्ड, पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड. पार्टिकल वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, वेरी करती है, वेव वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं है. फोर्थ, देयर इज ए इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया. देयर इज इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया. तो वहां पर एक इलास्टिसिटी और इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी. इनर्शिया, यू ऑल नो, the inability of a body to change its state of rest or of uniform motion or direction. And next is there is no transfer of energy. There is transfer of energy, energy transfer होगी, but particle transfer नहीं होगा. The net displacement of oscillating particle is always zero. That's it. Thank you all. Thank you very much. तो स्टूडेंट्स, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को यूज़ करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को स्टडी कीजिए, उसके अंदर सीक्वेंस वाइज वीडियोस चाहिए. जो जनरल चैनल है उस पर वीडियोस तो रैंडमली आएगी, डिफरेंट टॉपिक से आएगी, तो वहाँ से आपको एक ही वीडियो दिखेगा, 2 वीडियो दिखेगा किसी एक टॉपिक का जो भी रिसेंटली अपलोड है. लेकिन प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल को यूज़ करना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स सारे मिल जाएंगे जिस चैप्टर में जाना चाहते हो आप. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. हैप्पी लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम विपिन सर. थैंक यू. एनी सजेशन इफ यू हैव, never hesitate to WhatsApp me on 9814121996. Please don't call. I will not be able to take call, but I will definitely respond to your WhatsApp. God bless you. Bye bye.